Namaskar, hello data and skill explorers. Welcome back to DivKLearner, a bit forward daily. Today we are going to check another question across 5 AI tools like ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, or and Perplexity. And the question for today is how to create a table in SQL. आज हम एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं अक्रॉस 5 AI टूल्स जैसे कि हम पहले भी कर रहे थे चैट जीपीटी क्लॉड जेमिनाई कोपायलट एंड परप्लेक्सिटी और आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन एसक्यूएल यानी हम चेक करेंगे कि एआई टूल एसक्यूएल टेबल क्रिएट करने का एक्सप्लेनेशन कैसे देता है और क्या क्या देता है और वो जो सिंटेक्स उसमें दिए हैं वो काम करते हैं या नहीं सो ये वीडियो किसके लिए है दिस वीडियो इज फॉर फ्रेशर्स लर्निंग एसक्यूएल सर्वर फ्रॉम स्क्रैच अगर आप बिगनर हो और एसक्यूएल सर्वर स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो एआई एंथुसियास्ट जो देखना चाहते हैं कि एआई टूल सेम क्वेरी कैसे रिस्पॉन्ड करता है या क्या रिस्पॉन्ड करता है फ्यूचर पावर बीआई एंड डेटा एनालिस्ट लेटर हम इस इन डेटाबेस का डेटा पावर बीआई में विजुअलाइज करेंगे ये वीडियो मेनली फ्रेशर्स के लिए है लेकिन अगर आप एआई या पावर बीआई में इंटरेस्टेड हो आपको भी काफी वैल्यू मिलेगी सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर फ्रेशर्स right, for learning SQL Server. But if you are AI and Power BI interested candidates, this can still help you out. So what are we going to cover today? आज हम क्या क्या करेंगे हम AI tool के response को clarity और accuracy के basis पर rate करेंगे. We'll be rating them on clarity and accuracy for the responses that we'll be getting from AI tools. हम SQL Server की स्क्रिप्ट रन करके देखेंगे सर्वर में जैसे कि प्रीवियस वीडियो में डेटाबेस क्रिएट किया था like the way that we have created the database in the previous video we'll be running the script again to check whether those scripts are running correctly or not हम चैट जीपीटी के क्रिएट किए डेटाबेस का नाम रीनेम करेंगे so that would be the other thing that we'll be doing और जो क्लैरिटी का स्कोप है so the clarity scope में हम will be checking the syntax example data types technical jargons whether used or not database text if they have given you the test or not ये सब आज हम कवर करेंगे आप अपना रेटिंग कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं यू कैन ऑल्सो शेयर योर ओन रेटिंग इन द कमेंट्स सो चलिए शुरू करते हैं जस्ट बिफोर वी स्टार्ट इससे पहले कि हम स्टार्ट करें अगर ये वीडियो के 50 कमेंट्स मुझे यस में के साथ रीच करते हैं तो मैं इस सीरीज को लाइव कर दूंगा जो पांच दिन एक वीक में हम बनाएंगे सो if I get 50 comments as yes on this video I'll make this video as live working 5 days a week in which you can ask your live queries and I'll be also giving you help with the uh, with the things that we are doing so अगर आप लाइव सेशन चाहते हो तो कमेंट करें yes if you wanted the live session please comment on yes so very quickly let's just see what we have to do so I'll remove this and start with the demo so what we have done is we have already asked this question or we have already inquired about this question from 5 different tools like ChatGPT, AI tool as in Claudia, then Perplexity, Gemini, and Copilot. So these are the 5 different tools in which we have already worked on. And I've got the answers here. So I have copied and got the answers here. And I've rated them on the clarity. So language, so this is the part that we are talking about where we are running the query to create. So for clarity, I've not reduced any score for them. Clarity is fine. The only thing I found out was that there were different definitions. Some were giving better definitions, some were not giving better definitions, as in they were not of the same value. But on accuracy, I found out that there were some differences. That's the reason I have also given some zeros here because it did not have the technical depth in the definition. So I have this document has also been created here. So I'll go through that. But before I go to that part in which I tell you
that what was working and what was not. Let's just try to first open up the SSMS, which is the SQL Server Management Studio. And the first thing that we are going to do is we are going to rename the database that we had created with the help of ChatGPT. We had named it earlier as SchoolDB. So I'm going to do a right click on this and click on rename and rename it to ChatGPT. So this has been created. Now we'll be working on the queries that has been given by each one of those. So let's go to this, and then this, it is talking about creating the database or creating the table named student, which is having the student ID as the primary key, name as the n varchar. So name is having the text values, age is int, and city is in varchar again. Again, it is just talking about the jargon, but it is giving you the things here that student ID is number, name is text, age is number, and city is text. So you can save up to 50 characters there. So it is also talking about the primary key. Primary key is the unique identifier for each record. So it is giving the student ID as the primary key. So let's just try to run this and see if this executes nicely. So for doing that, I'll go into the SSMS and here I'll say new query. And the moment I click on new query, I'll have to check which database it is getting executed in. So it is executing in the ChatGPT school DB. So here I'm going to just paste that query and execute it. So the moment I execute it, it creates a table for you. It says that the command has executed successfully. So if I go in here and I see the table, I see the student table being created there. So this is how you can test, but AI tool has not given us how to test it, right? So in the AI tool, if you see, they have given us, yeah, they have given us to check the table. I can run this, but at the moment, my table doesn't have any value. If this gets executed, that means that the table has been created and it will return that it has zero values. So what I can do is I can click on new query, or what I can do is I can just hit enter after this, put that line there, highlight that command and click on execute. So it is showing me the name of the columns, but it is not showing me the values. The reason being because we don't have any values in that. So that way the syntax is working and we are able to test it as well. So is the syntax accurate? Accurate? I say yes, it is. And real execution, I say yes, it is. It's getting executed. So we are fine with that. The next thing is Claude. Let's just see about what input it is giving us. It has given us the complete query. So let's just pick it up all in one go. So it is creating an employees table, it is creating a customer table, it is creating an order table, it is creating a product table, order details, and then it is also giving us help for the customer. So let's just run it. It is not just creating one table, it is creating a various number of tables, and it is giving you various number of commands to check what you can do. So I'll go into the database, go into the Claude database, do a right click, and then I will say a new query, right? So the moment I click on new query, you will see the database name here is CloudDB. I'll copy the entire thing that we have been receiving from there and execute it. So this will not just create one table, it would be creating more than one table. So if I go into the tables, you will see we have created a customer table, we have created an employees table, we have created an order details table, we have created an order table, and the products as well. Now, when we are saying customer ID, it is saying that customer ID is the primary key and it is giving an identity. Identity means that it automatically increases by one. So that is what it has given you. This get date automatically creates the date for you. Now let's see. Whatever they have given us here, have they explained this as well or not? So if you see here, they are saying that varchar n, that variable length text, is n maximum, so it can have any number of characters. Decimal p is precision, s is scale. Date time bit is true and false, which is 1 and 0.
It's talking about primary key uniquely identifies each row. It's talking about identity, auto incrementing number starts at 1, increases by 1. So it has given you all the things that it has used here, like not null, so field cannot take any, field must have a value. Unique, no duplicate values are allowed. Default sets a default value if none has been provided. Check validates data meets a condition. Foreign keys, links to another table. Then we have quick tips there. And finally, what it is also showing you here is it created an employee table, it created a customer table, it created an order table, it created a product table, and it created an order details table. At the end, it said that give me the schema of all the tables that we have, right? So that's the reason if I take you back here, you will see this command that we have. If I just highlight this command and execute it, this gives me the name of all the tables, and the table type is the base table. Here, it is giving you the information about the customer. So it is giving you the details about the customer. So this is the customer name. These are the columns. This is identity, row, grid column, data located on file. So this is too much of information. We'll not go into the depth part of it at the moment. We'll see it later. So अभी तक मैंने जो है वो दो चीज़ों का कंपैरिजन करा है. एक तो आपका चैट जीपीटी से जो रिजल्ट आया और जो क्लॉड से रिजल्ट आया. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो मेरा चैट जीपीटी से क्वेरी आई थी वो मैंने रन करी. रन करने के बाद मेरा टेबल क्रिएट हो गया और इसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट की जब क्वेरी को रन कर रहा हूँ तो वो मेरे को यहाँ पर सिर्फ कॉलम्स के नाम दे रहा है. क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी कोई डेटा नहीं है डेटाबेस में. जब मैंने यही चीज क्लॉड से निकाली तो क्लॉड ने एक टेबल नहीं मुझे 5 टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी दी. एंड देन उसने मुझे रिलेशनशिप, फॉरेन की, प्रोडक्ट वगैरह के बारे में भी बताया. अगर आप प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी की वो होती है जो एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करती है. यूनिकली मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए सारी जगह पर. फिर उसके बाद अगर हम फॉरेन की बात करते हैं तो प्राइमरी की से की के टेबल से एक और किसी टेबल के अंदर अगर हम डेटा लेके जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कोर्स है और उसमें कितने स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, इनको डेटाबेस में रखना है, तो जो कोर्सेज हैं उसके अंदर की प्राइमरी की और जो स्टूडेंट एनरोल्ड हैं उसके अंदर की फॉरेन की फॉरेन की बनेगी. उसकी प्राइमरी की जो है उस टेबल के अंदर, मतलब कोर्सेज के टेबल के अंदर की जो प्राइमरी की है वो स्टूडेंट जो उस कोर्स में एनरोल होंगे उनके उस टेबल के अंदर फॉरेन की बनेगी. तो इस तरह से हम रिलेशनशिप बनाते हैं ताकि हमारा दोनों में कोऑर्डिनेशन रहे. और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट वाला जिसके अंदर ये बता रहा है कि जो मेरा कस्टमर टेबल है उसके अंदर मेरे पास क्या क्या कॉलम है और उनमें क्या क्या डेट्स हैं. तो सिंटेक्स के अंदर हमारे को सब पता चल गया. उन्होंने कस्टमर की डेफिनेशन दे दी, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन दे दी है, टेबल्स जितने बने हैं उनका नाम दे दिया है. तो उन्होंने क्वेरी दे दी है जिससे हम ये चेक कर सकें कि जो हमने बनाया है उससे कुछ इम्पैक्ट बना है या नहीं बना है. तो मैं यहाँ पर इसको भी 1 और यहाँ पर भी 1 दे देता हूँ. अब हम बात करते हैं परप्लेक्सिटी की. तो एक बार चलते हैं परप्लेक्सिटी में. नाउ विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट परप्लेक्सिटी. And in the perplexity you will see that it is giving you the basic syntax and then it is giving you the command for creating a person's table. So इस person table को create करके देख लेते हैं हम यहाँ पर SQL server के अंदर. लेकिन उससे पहले हम किस में जाएंगे? हम जाएंगे डेटाबेस के अंदर जो हमने परप्लेक्स के लिए बनाई थी. तो ये रही परप्लेक्स के लिए डेटाबेस. सो आई विल से न्यू क्वेरी और मैंने यहाँ पर ये सिंटेक्स लिखा और इसे एग्जीक्यूट कर दिया. तो अभी तक मैंने देखा कि तीनों के अंदर सिंटेक्स जो है हमारे काम कर रहे हैं. सो द मोमेंट आई रन द कमांड दैट हैज बीन गिवन in the system, it works, right? It gives the results for all the three query. Now here what I find is they have asked you to create the table. You have created the table. Whether it is actually giving you the table or not, as in whether it has actually created the table or not, it is not giving you that information. One information is you can see from there, this says command executed successfully.
but they are not giving you any query to check that this table has been created. So there is nothing that we can test it with, like the way that the previous two have done. So if I go in here in the database for Perplex and go into the tables, I will see the new table has been created. So here I see that this is fine, but consistency with real execution, I still want to give it 1, but I would take out something from here for the Perplexity because it is giving you the example. It is giving you the language structure example. Formatting and readability is fine. Engagement factor is there. I have removed one's point for the technical depth of it in the Perplexity because it has not given us a lot of information there regarding the tables and what is getting created and how it is getting created there. Now moving to the next part. अब हम अगले पार्ट में चलते हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी. We are talking about Gemini. Gemini ने हमें एग्जाम्पल दिया. This was the script that they have given us, but उससे पहले उन्होंने explanation दिया, syntax दिया और फिर ये script दी हमारे को. मैंने स्क्रिप्ट ली और यहाँ पे जाके मैंने डेटाबेस चेंज करा और डेटाबेस मैंने कौन सा लिया, जेमिनाई का, और न्यू क्वेरी पे क्लिक करा. यहाँ पे परप्लेक्स आ रहा है अभी भी. यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में जा सकता हूँ और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या, जेमिनाई. और फिर जो मैंने कमांड कॉपी करा था वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. सो इट इज क्रिएटिंग अ एम्प्लॉइज टेबल. एक्सक्यूज मी. तो हमने देखा कि ये कमांड हमारे को हमने अपने जेमिनाई से ली और इसको हमने एग्जीक्यूट करा. तो यहाँ पर अगर हम जेमिनाई के अंदर जाके देखें, टेबल्स को एक्सपैंड करें तो हमारा ये टेबल बन गया होगा. लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो दे हैव नॉट, दे हैव गिवन अ गुड एक्सप्लेनेशन फॉर दी थिंग्स. बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने सारी चीज़ों की. एक खासकर एक वीडियो भी दिया है जिसे आप देख सकते हो पूरा टेबल को क्रिएट करने के लिए. बट इसके अंदर एक ही चीज़ मिसिंग है एंड दैट इज कि इन्होंने भी हमारे को ये नहीं बताया कि टेबल क्रिएट होगा तो हम चेक कैसे करेंगे. तो अगर मैं तो एक्सपर्ट, मतलब आई हैव सम एक्सपीरियंस ऑन एसक्यूएल सर्वर, तो मैं इन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ. अगर आप एकदम नोविस आए होंगे तो आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी कि कहाँ हम देखें, कैसे क्या देखें, वो चीज़ें. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंटेक्स एक्यूरेसी में इसको 1 दे दिया है एंड रियल एग्जीक्यूशन में 1 दे दिया है, लेकिन टेक्निकल डेप्थ के अंदर आई हैव गिवन इट 0. तो आई एम नॉट गिविंग इट 5, आई एम गिविंग इट 4. इसी तरह से अगर हम को पायलट को देखें, लेट्स जस्ट सी अबाउट द को पायलट. सो यहाँ पर वी हैव अ डेटाबेस फॉर को पायलट एज वेल. और अभी इसके अगर हम टेबल्स देखें तो टेबल्स बिल्कुल खाली हैं. तो लेट्स सी को पायलट हमारे को क्या बता रहा है. को पायलट इज टेलिंग अस दैट this is the table basic syntax and this is the table that you can create, customer table, and it is giving you the explanation of each of those. This is primary key for each customer, first name, last name are text field that cannot be null. Email must be a unique across all rows. That's the reason if you have written on unique there. Join date, it has not explained you the get date, or it has not, but get date will automatically get you the current date there. So I'm just going to copy this, go into the SQL server, go into the Copilot database, do a right click and new query, and I'm going to run this command. So the moment I run this command and I refresh the tables, you will see that my table of customer has been created there. So creation has taken place, but because my object explorer, that's this part here, was not refreshed, so the table that I've created will not appear there unless I refresh the database or the table part of it. So this is all that we had to do, and this is the ranking that we had to give. I'll still give it 1 and 1 on the real execution as well.
अभी यही चीज हमें देखनी थी, हमने कोपायलट के लिए भी देखा, कोपायलट ने टेबल तो बना दिया हमारे लिए, बट इफ आई गो इनटू द कोपायलट क्वेरी, they are also not giving us how to test that the table has been created. अगर if अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने टेबल तो बनवा दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम टेबल को टेस्ट कैसे करें कि बन गया कि नहीं। तो वो एक चीज मुझे मिसिंग लगी यहाँ पर, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्कोर काट दिया इनका। तो अगर अभी हम देखते हैं तो दिस इज द टोटल स्कोर दैट वी आर गेटिंग, एंड execution was successful. I'll put yes for all the five of them. तो यही बस आपको मुझे दिखाना था, दिस इज ऑल दैट वी हैड टू शो यू। मैं कल भी आपको एक चीज बोल रहा था, मैं आज भी एक चीज बोल रहा हूँ, yesterday I was also trying to say you the same thing. We have created a library. I'll share this link in the description below. It was shared yesterday as well. You can go here and you can see all the videos for this particular playlist that we are doing, and then you can go to that particular video by clicking on this links here, right? So I hope you liked our video. जैसा मैंने पहले बताया था, I've already informed you earlier as well. If I get 50 comments yes in the chat of this video, so I will make this session live. अगर ये वीडियो 50 कमेंट्स yes के साथ रीच करता है तो हम ये सीरीज डेली लाइव करेंगे, 5 days a week, जहां हम आपके लाइव क्वेरीज सॉल्व करेंगे और AI असिस्टेंट SQL एक्सप्लोरर करेंगे। अगर आप लाइव सेशन चाहते हैं, कमेंट जरूर करें, और अगर आप आर लर्निंग मटेरियल या वीडियो डिटेल एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आई विल शेयर दिस वीडियो लिंक। दिस वीडियो लिंक विल गिव यू द एक्सेस टू द लर्निंग मटेरियल और द वीडियो डिटेल्स। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप आज डेली कुछ नया सीख रहे हो हमारे साथ। आई होप यू आर लर्निंग समथिंग न्यू डेली विद अस। Don't forget to subscribe, like, and share, or learning spread करें। Thank you again for being part of DivKLearner, a bit forward daily. Until tomorrow, keep learning, keep churning. Bye bye.